Hi Ravish, thank you for taking out the time गणेश चतुर्थी के दिन एंड आई नो बाहर गए हुए थे फैमिली के साथ तो डिसाइड करना कि चलो हाँ आकर हम ये करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम गाइस अगेन. रविश मेरे कॉलेज का फ्रेंड है. हम आईआईटी गुवाहाटी में साथ पढ़े हैं. उसके बाद रविश ने बहुत कुछ किया है. दैट्स द रीजन इज हियर. है ना. तो बहुत मतलब रविश इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड गाइस तुमको भी पता चलेगा कि रविश ने क्या क्या कर रखा है एंड देन विल ड्वेल इनटू ईच ऑफ हिज एक्सपीरियंस. ट्राई टू नो मोर अबाउट कि रविश क्या है, क्या किया है उन्होंने और अभी क्या करना चाह रहे हैं. ओवर टू यू रविश. Okay, thanks Vaibhav. I think as you have already said, IIT हम लोग साथ में किए हैं, so that needs no introduction. IIT गुवाहाटी 2008 से 12 हम लोग मैकेनिकल के ग्रेजुएट रहे हैं. Interestingly, during IIT, I was part of a interesting train journey called Jagrati Yatra, which literally shifted the world view for me, and we can talk more about that in the ensuing conversation. From IIT, I was fortunate to go into IIM Ahmedabad, thanks to the marks that we got in CAT. We all prepared for it. I recall the preparation day. But कुछ की किस्मत ठीक थी, कुछ की अब क्या कर सकते हैं. So I was fortunate once among all. I'm very grateful for that. So at IIM Ahmedabad, I pursued the path for operations and strategy. That were the domains that I focused on. Thankfully, in first year internship, I got into PricewaterhouseCoopers. वहाँ internship भी किया. Internship के बाद PPO मिल गया मुझे. So my second year was literally chilled out. I focused on subjects which were of real interest to me. और सेकेंड ईयर के बाद प्राइस वाटर हाउसकूपर्स ही ज्वाइन किया मैं in their strategy domain. For 1.5 years, I was with them over different projects, short projects, long projects, serving different clients. But eventually, I realized that I was a person that needed more of a additional responsibility and more accountability for myself. Being a consultant was more like an execution person, not really taking ownership of the project. I went into Car Dekho was in growing stage around that time. वहाँ मैं strategy office का part बना, and in the strategy office I was also because I openly said I want to dwell more into operations. I was given charge of the whole call center. जो आप पैसा बाजार और पॉलिसी बाजार के कॉल्स, स्पैम कॉल्स आप फील करते हो. I was someone who was behind some of those calls, refining and trying to improve the customer experiences through different data points and calling conversation. After that experience for Cardocco was literally very much learning stage for me. In 1 year, I learned a lot, which otherwise I would not have. But something happened around that end of the 1 year that shifted my worldview around starting up, which I was not able to gather the courage for starting up on my own. Uske baad, I came back to Bihar. That is something which many people would find this shocking, but it just happened. One thing led to another. I became part of a non-profit run by some of my friends who were part of the Jagrati Yatra. We met in Jagrati Yatra 4-5 years back, and then we were working together as part of a non-profit in Bihar, working for farmers in increasing their farm-based income. We did that for almost 3 years, switching in South Bihar and some of districts. But I eventually found my interest in working with young population, young people, and the motive of joining the farming was I wanted to inspire young people to do more of the farm-based work. But I lately realized that farming is something people want to get out into, and it makes more sense for people to get out of it and get into formal occupation. And that
that realization made me pick into the work that my current organization is doing, Pan IIT Alumni Foundation. We are currently based in Jharkhand. I lead operations for this organization. We currently serve around 7,500 rural youth on an annual basis. It's a very interesting model in which we literally focus on underprivileged youth, most of them who would not have completed their schooling, and plug them through provable skills and a uh, formal ecosystem, so that they become part of a formal job structure with a stable monthly income, the job-based assurances and benefits that a normal employee gets, which was something hitherto unheard for people who come from very poor background. They literally have no say in getting into those kind of paths. So I am very proud of the work that we do in Jharkhand. I have been part of the organization from last 4 years. And because I am proud and very happy working here, last year in around November, December, I formally also realized that in my individual capacity, I could also help young people who are more well studied, who have better formal education, but they are also confused in different figuring out ways of life, ways of career, in finding something which is of their true nature and true fulfillment. And because I have crisscrossed my path across different sectors, I felt that it is my duty uh, to at least be a guiding light about some of these sectors so that people can make a more judicious calls about their career choices. So that's where I come, Weber. I think that's pretty Very long correct. and नहीं नहीं, आई थिंक इट वेरी इंसाइटफुल एंड आई वाज टेम्पटेड कि मैं बीच बीच में रोक कर सवाल पूछूं कि यार व्हेन यू से कि यू हेल्प दी स्टूडेंट्स इन झारखंड, तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हो, बिकॉज मुझे लगता है वो भी एक अलग लेवल का चैलेंज है। तो अपन उन सारे चैलेंजेस पर आएंगे, बट उससे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। रविश, यू हैव बीन इन आईआईटी एंड यू हैव बीन इन आईआईएम, यू हैव बीन इन आईआईएम पास आउट, व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट वुड यू पिक, आईआईटी वर्सेस आईआईएम? both एंड डोंट have गिव मी एन आई एम आंसर। आई एम आंसर से मेरा मतलब है बहुत डिप्लोमेटिकली कि अच्छे दोस्त आईआईटी में मिलते हैं, लेकिन हाँ ये आईएम में ज्यादा होता है। आई वांट टू नो। So I will be very frank on this. हाँ In IIT, I had more of a practical side of the world, because IIT was like our first करेक्ट। opportunity to feel free. IIT से पहले तो हम लोग जेल में ही थे, मतलब कोचिंग वाला जेल, स्कूल वाला जेल ही तो था। IIT we literally felt free for after a long The time, first time, right? first time. So I would never undermine that opportunity, which literally opened our wings and tried us. I was fortunate to move around the Northeast, Seven Sisters, Guma, which I could never dream of, coming from a small state, in Bihar. So IIT gave me a lot of freedom, lot of opportunity to delve into practical side of it. If you recall, हम लोग जंक यार्ड वॉर्स किए थे। जंक से हमने स्टफ बनाया, मूवेबल स्टफ। फिर ऑटोमोबाइल का हमने क्लब स्टार्ट किया। सो और रोबोटिक्स का वी वेर एबल टू बिकम पार्ट ऑफ द नेशनल स्टेज रिप्रेजेंटिंग IIT वाटी। तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ IIT। सो आई वुड नेवर अंडरमाइन दैट, बट व्हाट आई वुड अप्रिशिएट IIM more for is the actual learning that happened in the classroom. In IIT, I was not learning much in the classrooms. I would not, I'm very frank here, but that is what it is. In IIMs, mostly in the second year, when I was more chilled out because I had the PPO and I could just pick on subjects which were of interest to me.
So I learned a lot. I learned with amazing teachers in IIM. Uh, they are just mind-boggling. The way they were able to bring the class conversations together, and you feel part of the conversations at times by contributing yourself. That is something which I do not see happening in IIT, because still like someone is just telling and we were just making notes, and we were just applying the notes and the exams. So from learning wise, I would rate IIM much higher. In the classroom, out of classroom, my learning was more in IIT. I hope it's diplomatic. It sounds diplomatic, but that's the reality. Correct. See, when you have done an MBA, तो मेरे हिसाब से बहुत difficult हो जाता है डिप्लोमेसी को निकालना लैंग्वेज से, which is a good thing actually. ठीक है, परफेक्ट. सो रविश, Sorry. तुमने डिटेल में बताया कि मे बी आई थिंक जो टाटा जागृति यात्रा करी थी कॉलेज में, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, कि मतलब उससे एक विजन मिला कि हाँ क्या करना है. बट फिर भी आईआईटी के बाद बहुत लोग सोचते हैं कि यार अब क्या करना है, एक जॉब में जाना है. जैसे अभी रिसेंटली मैं दिल्ली से आ रहा था तो आई मेट समबडी फ्रॉम उदयपुर, आईआईटी गुवाहाटी का पास आउट था. उसका शर्ट देख के मेरे को, टी शर्ट देख के मेरे को ऐसे नॉस्टैल्जिया फील हुआ. मैंने जाकर बात करी क्या, तो जैसे वो Okay. कंसल्टिंग में जा रहा था. तो मतलब टेल अस, मतलब सी यू हैव सीन अ लॉट ऑफ करियर्स, है ना. तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ समबडी हु इज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम टायर 1 कॉलेज, है Mm-hmm. ना, आईआईटीज, एनआईटीज, बिट्स, ट्रिपल आईटी, ये सब. व्हाट डू यू थिंक उनके लिए क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, एंड हाउ डू यू कंपेयर दीज? सो मतलब you can include anything and everything. You can include core, you can include consulting. A lot of consulting companies campus में आती है. कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि यार हमको आगे जाकर एमबीए करना है, तो वो क्या डिसीजन होता है, किन फैक्टर्स के बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं? एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू शेयर यहाँ पर? Okay. The question that you have asked is like half an hour landscape conversation. It's a career landscape conversation, which lot of coaches that I have conversation with, they need this kind of landscape view. So I will try to be brief as much as possible. करेक्ट, But करेक्ट, करेक्ट. so राइट. मतलब इसमें मैं एक और ऐड कर दूं, जस्ट टू uh-huh. ऐड हियर, जैसे कि रिसेंटली आई वाज वर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र, राइट. तो उन सबका करियर, मतलब उनके दिमाग में एक क्लैरिटी थी कि यार हम किसी भी ब्रांच से हैं, वी वांट टू गेट इनटू अ कोडिंग करियर, राइट. और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जब मैंने किया, मैं बहुत बहुत पुराना हो गया हूँ अब, मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन तब ऐसा नहीं था. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो भी जा रहा है कॉलेज में वो ऐसा सोच रहा है कि यार कोडिंग में करियर बनाना है, मतलब पैसा कोडिंग में है और उसी में जाना है. तो अगेन, दिस इज जस्ट अ फ्लेवर दैट यू कैन यूज इन योर आंसर, Okay. राइट. कैन एग्री और डिसएग्री और... No, I would not disagree with this. E-coding as a space has indeed become very attractive. वो attractive तब भी था. If you recall, वैभव, हमारे कैंपस में सूट बैठ करके घुस रहा है एक साइड में, खतरनाक कोडिंग कर रहा है मैकेनिकल का बंदा, और Correct. उसी पेस में वो मैकेनिकल के ग्रेड्स भी एस कर रहा है. So it must be feeling, some of us must be feeling very jealous of the capability that he had. So Correct. it is obvious, but coding as an opportunity, I would say that because of the invent of AI and generative AI, particularly, coding as a space is going through a lot of change, very groundbreaking change, and I'm seeing it live as I'm interacting with a lot of people who are in early stages of career. They are feeling that केवल coding से काम चलेगा नहीं. So they need to understand the nuances of coding. So because in AI you type the input and output will come out, but how the output is generated, you have to learn. Otherwise, you will not be able to defend your own boss when you are submitting those codes. So people who are looking for shortcuts would find it very difficult to survive in this time. So the focus has to be on the basics. Now, knowing that basics are important for someone who is in college, tier 1 college, as you have said, in engineering,
there are three options. First is clearly the code. If you are really good in the code subjects, you have aged well in your specialization in branch. There in your core subjects, then there is two options. One option is either you continue studies in your core subjects. That core subject would be MS कर लो या इंडिया में कर लो MTech या MS या बाहर चले जाओ. So that is like continuation of the research, which might eventually turn into a very super premium expertise outside India, or a research-based role which eventually turns into an academician in one of the campuses. So जो professor से आप सीखे हो वही professor आप शायद बनोगे in some time. So that's one career path that people take. There is another career path in the code that people take in the specialized work in industry. Unfortunately, that space has been shrinking a lot over years. हम लोग भी जब शुरू किए थे तो lot of PSUs used to come in campus, but by the time we were passing out, the PSUs had stopped those filters and started hiring from gate. They still hire from gate, but even after gate, the amount of formal recruitment has significantly reduced. So PSU jobs in India have been shrinking, and they are not in sufficient numbers to absorb all the code-based people. So you have to be very judicious when you are picking those options. So if you are picking the code-related work, then you would have to give gate. Sometimes you also might have to give some more exams, which the entry, which will be the entry-based exams of different PSUs, because they conduct their own entry barriers to ensure the relevant skills for their work is available. तो ये हो गया पहले set of people who are focused on the code. मतलब these are typically people who enjoy studying in campus. जो subjects उन्होंने लिए हैं, they enjoyed, and they are the people other branch people would reach out to. मतलब जो जिनसे वो सीखते हैं अपने एग्जाम्स के लास्ट नाइट की तैयारी जिससे करते हैं, वो बंदे होंगे जिन्हें who will either go into the MS way or the core job way. Now comes the second kind of people. The second kind of people usually leave this opportunity. मतलब वो engineering का space ही पूरी तरह से छोड़ते हैं, and they leave for other pastures. So one pasture is the MBA path. यहाँ पे वो management pick करके they want the completely different landscape जो that MBA provide, or they go into the UPSC preparation. They move into the State Services Commission exam, because that is also a pressure that some of us had at campus. I still recall some of our batchmates reaching out to me saying after 4 or 5 years of preparation that now they are deciding to move on. So that is also a path that people take. And third is they decide to pursue a business or their own family business or their own passion. That is the entrepreneurship path. So this part is picking up a lot with a lot of awareness around startups. Shark Tank का भी बहुत बड़ा role रहा है इसमें. So this is of people who are non-engineering background, पूरा engineering छोड़ दिया उन्होंने. Now तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जो फंस गए, कोड इंजीनियरिंग भी नहीं करना है और पूरी तरह से छोड़ना भी नहीं है, because they do not see their engineering degree as a sunk cost. They want to कि कुछ ना कुछ use करें उसका. Now for these people it's a messy affair. Messy affair, why? Because most of the time they are not very clear exactly क्या करना life में, and so they usually experiment. So experiment is where you see the hard race. कोई अच्छा कर रहा है, उसमें अच्छा पैसा है, तो वही करते हैं. So coding and consulting or JP Morgan type या Schlumberger type jobs, they are the jobs which attract people of these kinds. क्या मतलब भीड़ आती है, 4-5 ही select होते हैं, बाकी सब reject होते हैं. They again try for another भीड़.
they again get rejected, and some of them keep getting selected, some of them keep getting rejected. Ultimately something gets stuck to them. But in the job, in initial 1 to 2 3 max to max 5 years, they realize कि बॉस क्या वर्क कर रहा था, क्या नहीं वर्क कर रहा था. So they would either pick one of the options in 1 or 2. They would either continue their formal education, जो कि इंजीनियरिंग में स्टिक करेंगे, नहीं तो नॉन इंजीनियरिंग करके वो आगे निकल जाएंगे. Very few of them would remain in that sinkhole जहाँ जो उन्होंने पिक किया अपने लिए. So that's how I define the choices. It was very brief, but I think that serves the purpose. हर चीज के बारे में एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, उसकी स्ट्रेंथ्स अलग है, प्रेफरेंसेस अलग है, तो वो सब चीजें भी मैटर करती हैं. आई थिंक इवेंचुअली यू रियलाइज, मतलब तो कॉलेज से निकले हो तो आपको काफी हद तक नहीं पता रहेगा आपको क्या करना है, बट वंस यू चूज वन ऑफ दीज 3 पाथ्स और एनीथिंग एल्स, यू विल इवेंचुअली रियलाइज कि हाँ आपको क्या करने में मजा आ रहा है, एंड यू बी ग्रेविटेटेड टू दिस, राइट? ठीक है रविश, यू टॉक्ड अबाउट योर आईआईटी गुवाहाटी की जर्नी, की क्लास के बाहर बहुत कुछ सीखने को मिला था. तो टेल मी 3 थिंग्स दैट जो तुमको लगता है कि नहीं यार बहुत मीनिंगफुल थी और मतलब उससे कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, राइट? इन आईआईटी, यस. तो पहले तो क्लियर है कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. मतलब आप क्लासरूम में रह के आप एक सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग में ही बंधे रह जाते. So only when you get out of room and apply your mind in things around you, actually solving problems in different ways, that opens up your mind a lot, and you remain rooted to reality कि यार यही चीज है जो डिफाइन करती है इंजीनियर्स को, we are solving problem. तो मेरे लिए वो सब एक्सपीरियंसेस बहुत हेल्पफुल रहे. So that is to one. add to that, right, what you were saying in starting, no, जब पहली बार आईआईटी में पहुंचते हो तब लगता है कि यार बहुत फ्रीडम है. दिस इज नॉट जस्ट फॉर आईआईटीज, मतलब कोई भी कॉलेज आउट देयर जब इंसान पहली बार जाता है, मतलब पहले तो कितनी बार उसने डिसाइड नहीं किया होता है कि उसको क्या करना है, बस ऐसा कि हाँ चलो आईआईटी कर सकते हैं, चलो आईआईटी कर लेते हैं, या फिर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं. लेकिन जब वो कॉलेज में पहुंचता है तब पहली बार, मतलब अगर वो हॉस्टलर है तो घर वालों से दूर होता है, उसको काफी फ्रीडम मिलती है, तब वो सोचना स्टार्ट करता है कि यार मेरे को एक्चुअली करना क्या है. और कॉलेज के बारे में यही बेस्ट चीज है कि इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम कि आप सोच सको आपको क्या करना है, अ लॉट ऑफ एवेन्यूज टू एक्सप्लोर, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल मतलब कॉलेज में जाके आपको रियलाइज हुआ कि यार आपको टीवी कमेंटेटर बनना है तो आप वो भी बन सकते हो, है ना? इट विल गिव यू दैट फ्रीडम. अगर आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनली कुछ मीडिया में जाना है तो आप मीडिया में भी जा सकते हो, आपको स्पोर्ट्स में जाना है स्पोर्ट्स में जा सकते हो. तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट कॉलेज. और अंडर ग्रेड जब अपन बात करें तो, क्योंकि जब आप एमबीए करने जा रहे हो या फिर उसके बाद कुछ भी कर रहे हो तो यू हैव मेड अप योर माइंड, लेकिन जब आप फर्स्ट कॉलेज में जा रहे हो तो इट इज योर टाइम टू एक्सप्लोर कि यार यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, अब मेरे को आगे क्या करना है ना? सो आई थिंक वेरी, मतलब यही यू वर ट्राइंग टू से, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट. जो फ्रीडम मिलती है उससे वी कैन बिल्ड ऑन दैट जो भी करना है. Right. In fact, the vocational opportunity that we got, vocational in that some जैसे cultural है, sports है, which you rightly said, ये out of classroom experiences है, and these experiences are very limited in our schooling interfaces. स्कूल में ज़्यादा एक ही annual day sports में दौड़ा देते, but where is the culture of sports in schools these days? Very much missing there. बट इन आईआईटी इंटर आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए कितना, मतलब बास्केटबॉल की मैम तुम्हें याद है कितना दौड़ा देती थी, आधे लोग तो पहले दिन ही कट लेते थे कि भाई ये ना हो पाएगा उनसे. सो आई थिंक दैट रिगर एंड डिसिप्लिन also which you need in life also comes from these experiences in college. So Correct. I would not discredit the rigor and discipline and a lot of elements around nurturing friendships. I know that we are not in touch anymore, a lot of people from campus, and that is a part of the life. But appreciating and respecting people for their contrarian views, so, that was the first time in my life that I could really see that people from different geographies of country
with different languages, different viewpoint, we're sitting together in a classroom or even sharing food in our mess, and that is what defines India, right? And I would not have got that opportunity anywhere else unless I would have been a part of a campus like IIT Guwahati. Not just Guwahati, any tier 1 college will give that opportunity to see the uh, social amalgamation that undergrad college provides. So our social skills also get built. Over time it does get refined, but initial जो hit है ना, like you would realize a leader in its nascence in the Correct. undergrad college. If you recall, some of us literally were given opportunities in platter to lead. हम लोग को इवेंट पकड़ा दिया गया था सेकंड ईयर में टेक्नीश में कि चलो इवेंट कराओ. अब नो बेस कोई कुछ नहीं, बट हमने करा दिया इवेंट. Imagine the amount of confidence that person would Get generate out of right, get right, out right. of that. Also, right. Also, to add to that, Ravish, I think you were talking about sports. Sports के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने अपने मतलब that has been a realization in last 3-4 years actually. मुझे लगता है स्पोर्ट्स आपको जितना कुछ सिखाते हैं वो कुछ नहीं सिखाता है. I had a wonderful teammate, you know, who was a cricketer एंड मतलब मैंने उससे पूछा कि क्या है, तो आई थिंक लाइफ में बहुत बार ना इट पेज इन द फ्यूचर टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट. और जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो ना तो यू वर्क एज ए टीम एंड देन यू लूज, है ना. वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हारना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स गिव दैट थिंग टू यू कि यार किसी चीज को आप आपका 100% दो, यू नो, गेटिंग दैट थिंग टू फर्स्ट गिव योर 100% एंड देन एक्सेप्ट डिफीट. क्योंकि लाइफ में भी यार आप कितने भी 30 मार खाओ कुछ भी करोगे, मुझे लगता है डाउन हिल्स आएंगे एंड देर कैन बी नो बेटर टीचर ए स्पोर्ट. सो आई हैव ट्रिमेंडस, मतलब लास्ट 3-4 years ना, उससे पहले तो मुझे कॉलेज में समझ में नहीं आया कि यार स्लम्बर्जर क्यों लेती है इंटर आईआईटी वाले बच्चों को, है ना. बट अभी लास्ट 3-4 years में मेरे को रियलाइजेशन हो रहा है कि यार जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनका डिसिप्लिन, उनका टीम वर्क, एक साथ एक मिशन को अकम्प्लिश करने का, और सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि यार अगर हार जाओ तो उस हार को कैसे एब्जॉर्ब करो एंड टू यू नो प्ले द नेक्स्ट. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर स्पोर्ट्समैन. जो पहले मैं एकदम डिसमिस कर देता था यार क्या है स्पोर्ट्स, लेकिन अभी मेरे को कुछ कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने पूरी मेरी थिंकिंग चेंज करी है एंड आई हैव कम टू टर्म्स विद कि यार जो स्पोर्ट्स खेलता है ना, मतलब उसने लाइफ को 1.5x जिया हुआ है ना. करेक्ट. सो सॉरी टू कट यू ऑफ, आई थिंक यू वर सेइंग. तो कॉलेज के बाहर, क्लासरूम के बाहर एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है. एनीथिंग एल्स जो यू थिंक इज, आई थिंक सबसे बड़ा तो यही था, बट इफ देयर इज समथिंग ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड तो. I think that pretty much defines right yeah. it. What about IIM? IIM में you said कि classroom learning बहुत अच्छी होती है. I also read this somewhere, पता नहीं हार्वर्ड में किसमें, one of the key factors of their acceptance is they look at diversity and their point of view was कि यार हमको क्लास डिस्कशन का जो लेवल है ना वो मैक्सिमाइज करना है. अगर हम अलग अलग लोगों से, अलग अलग बैकग्राउंड से लोगों को लेंगे जो अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग डिग्री के, तो फिर वो ऐसा तो फिर क्लास डिस्कशन बहुत अच्छा होगा, राइट. सो द फैक्टर्स दैट दे लुक एट इज यू नो डाइवर्सिटी, कि हम हर बैकग्राउंड से, हर डिग्री से, हर जोग्राफिकली डाइवर्स सब जगह से लोग लेकर आए. सो व्हाट डू यू थिंक कि आईएम में ऐसा क्या था विच इज मेमोरेबल एंड दैट हैज गिवन यू अ लॉट ऑफ लर्निंग, समथिंग दैट इज यू नो. आपको याद होगा हमारा मैकेनिकल में क्या जेंडर डाइवर्सिटी था? अच्छा, जेंडर डाइवर्सिटी तो हाँ कुछ भी नहीं था. आई थिंक वी, कोई एक भी लड़की नहीं थी हमारे बैच में. वी वर अ बैच ऑफ आई थिंक 56 पीपल. 56 नो गर्ल. हाँ हाँ. सेंसिटिविटी की तो बैंड बजी जेंडर डाइवर्सिटी तो नहीं होती, बट अभी मतलब अभी कुछ ऐसा उन्होंने कोटा किया हुआ है, नो नॉट येट. आईआईटी में मुश्किल है वो करना बिकॉज इट्स ए मेरिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कोटा करना मुश्किल है. मेरे एक भांजे ने मेरे को बोला था कि अभी शायद ऐसा कुछ है, मतलब सम नॉर्मलाइजेशन दैट दे ट्राई टू डू, जो मुझे लगता है होना चाहिए यार. मतलब होना तो एक चाहिए और यार. वापस मेरी एक फिलॉसफी है लाइफ में कि इंसान
प्यार में धोखा खा के जितना सीखता है उतना कुछ कहीं नहीं सीख सकता। तो प्यार में धोखा तो तभी खाएगा ना जब उसको प्यार होगा। सो मतलब अगर ये नहीं है तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू द लीडरशिप विल प्रोबेबली नेवर हियर दिस कि यार मतलब इट गिव्स यू दैट सेंस, मतलब आप इमोशनली ऐसे मेच्योर होते हो। अगेन जो मैंने बोला ना गेम्स के बारे में कि यार जब आप हारते हो, मतलब व्हेन यू गिव योर 100% टू अ मैच एंड देन यू लूज एंड हाउ यू बाउंस बैक, that's more important. So I think love is also on the similar lines. When you have your heartbreak, you recollect yourself and then you go the next day. So that's really really important. And I think Harsha Bhogle also has a speech around this ki yaar when they pick up a team for some premium team, they don't look at people जिन्होंने अपने पूरे करियर में एक्सेल किया है। दे ट्राई टू फाइंड आउट जो कहीं पर फेल हुए हैं, गिर गए हैं, टूट गए हैं, और उसके बाद दे बाउंस बैक। सो Yes. I think that's Yeah. a lot underrated thing, to lose to bounce back जीवन में, but that's really important. Yeah, coming back to IIM wala experience, so definitely that gender diversity just stands out because you coming from a class with no woman in it to a class where almost 50% of them are women. There is a lot that uh, that that comes in your voice, your the caution that you have. There are a lot of words that used to just move freely. So, but we had to take due caution. We have to. Uh, you also gain a lot of sensitivity about different topics, different aspects of life. So that is from a gender perspective. For me, IIM gave me that because till that time I had very limited exposure to all of that. क्योंकि कोटा में भी जो हमारी ट्रेनिंग हुई 2 साल की वो भी इसी तरह के मतलब अपने अपने में ही है। इन schools we are always in अपने अपने में, very very limited exposure to the other gender. स्कूल में तो अलग तरह का ही बाउंड्री कंडीशंस लगाया जाता है कि नहीं आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो ये। सो वी वर पार्ट ऑफ ए कोएड स्कूल बट I by nature was not very interactive with the opposite gender. But in IIM, I had to interact because we were made to be part of a group. अब केस स्टडी डिस्कस करना है तो ग्रुप में बात तो करना ही पड़ेगा, otherwise we would not be able to present. And we literally had exams every week or every fortnight. So हर subject में you are giving exam, so you become so used to getting assessed that you are not realizing that you are also learning in the process because you are giving so many exams in the process. For preparing each small exams, you are relearning, revising the concepts learned in the class, and most importantly, the case methodology. The learning method of learning from real cases of people who have faced any problem, which is a business problem or a life problem, of any domain, a strategy problem, HR problem. Learning it from a real practical case gives you an insight to be in the shoe of that person, and then speak from those experiences. So case methodology also hands down with the is a very very interesting model to teach, and it doesn't stop at that because case method anyone can replicate, but how to deliver a case in a classroom by facilitating a conversation between a well diversified group of individuals and professionals, that is a skill to have, which you and I cannot learn overnight. So that's a skill which IIM professors have. They are like, matlab, they will cold call you and they will just take out stuff from your mind. You will not realize that you are going to speak, but you will speak, and that would add, either it will get counteracted by someone else with a very beautiful point, and you feel like you are the biggest loser in the world at that moment, or you would not realize and you make such a powerful point that everyone will thump their table and appreciate you, and you feel like you're top of the world. So these kind of feelings will come and go in the classroom, but
eventually when you are listening to other people's conversations and their perspective, you learn about a problem and different facets of the problem in a very well-rounded way, which I myself just by reading a case would not have learned. So that is something which has stayed with me even after coming out of campus. Whenever I come to know that there is a professor with whom we have studied under, he is taking a session or is giving a session, we just figured out a time to be part of those sessions. So they're like even we recommend that other people, even though they could not be part of the full 2-year program, at least be part of the short duration programs if such professors are hosting. They are just of a different kind of species. We very high regard to them. Anil Gupta, you recall, Anil Gupta is like he has now retired, but he's like a tangential person. With always innovation coming out of his mouth. He will look at a presentation and say, what do you think that by combining this and this, something would interesting come out? And that is a value of an eccentric person who would look at a problem very differently from the rest of the world. That is something you would not get out of IIMs. Correct, I correct. regard that. Right. एक follow-up question रविश इसमें. So see, case studies have always मतलब I've never been a part of anything related to case studies. लेकिन अगर किसी इंसान को case studies पढ़नी है, so for example, तो are there a couple of sites that you can suggest जिस पे जाकर कोई case studies पढ़ So सकता है? IIMs also have their cases posted on the iimsd.earnet.in/cases, but in those cases are you have to purchase, because IIMs also purchase it from Harvard repository. All cases are created and submitted to Harvard, who verifies it. Are they following a certain model of how the cases have to be designed and structured? And then only it gets published. So there is a certain charge to it. People who are willing to sample cases, they could look at some part of every case, like abstract section. वो free view है. उसके बाद if that sounds interesting and you want to read more on it, you can buy those cases online. It's very simple. If you are looking for more cases of different domain, the Harvard library.edu, there you can look into cases which are coming from across the world. From IIM cases I know of is mostly the Indian contextual cases. So it depends on what kind of cases you would be interested to look into, and you can go on these platforms. There could be more platforms, but I have not explored them yet. Okay, ठीक है, thank you. ठीक है रविश, उसके बाद after IIM you got into consulting. Again, consulting is a field जो वापस दो फेस है. One is it's a high paying field. Consultants are paid really well first. Second, there is also this backlash that a lot of consultants face in terms of the actual amount of value that they add, so these are two different things. So tell us why consulting. Of course, one, why did you choose consulting? What is good about consulting? Consulting में क्या काम होता है? One objective, Ravish, of this discussion is, we've been in recruitment industry from last 10 years now, right? A lot of times हमको ऐसा लगता है कि यार अगर लोगों के पास सही knowledge होगा ना कि यार किस इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, किस रोल में क्या एक्चुअली काम होता है, तो they can take more informed decision. And that could be our contribution to help them make smarter career choices, right? So I'll again give a context to it. So जैसे when I talk to people who are graduating as engineers, उनको कितनी बार ऐसा रहता है कि यार again मैं इस जो शेयर कर रहा हूँ उसमें मेरा बायस भी ला रहा हूँ एंड आई एम एक्नॉलेजिंग कि मेरा बायस है, बट कितनी बार उनको ऐसा रहता है कि यार हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ी है तो हमको उसी टाइप की जॉब चाहिए.
what a lot of times that they don't realize is कि यार maybe इतना technical नहीं होता है जितना वो सोचते हैं, right? मतलब वर्ल्ड में साइलोज बनने हैं, ऑटोमोबाइल के लिए जर्मनी इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग. आप ऐसा सोचो कि यार आपको डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाना है इंडिया में, तो आई एम नॉट श्योर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होगी. यू ऑल्सो नीड टू लुक एट फैक्टर्स लाइक यार हम जो एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आई थिंक मतलब वी अ लॉट ऑफ टाइम्स वी सीक दोज डिजाइंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. तो कोई अगर इस भ्रम में रह रहा है कि नहीं यार मेरे को तो ना खुद का फाइटर प्लेन बनाना है और उसको इंडिया में रह के ये करना है, तो वो कितना ट्रू है, राइट? तो मुझे अगेन विदाउट एनी जजमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कितनी बार अगर लोगों को राइट एक्सपोजर मिलेगा ना कि यार किस इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या काम रहता है, किस प्रोफाइल में क्या काम रहता है. सो दैट्स द गोल ऑफ दिस डिस्कशन, राइट? मतलब मैं फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आई वांट टू ब्रिंग आउट कि यार यू हैव हैड सच अ वास्ट एक्सपीरियंस, तो हर फील्ड में व्हाट आर some details that you can share, ताकि somebody who's listening, who's watching this now can get that clarity कि यार कंसल्टिंग में ये लाइफ होती है, ये वर्क लाइफ बैलेंस होता है, काम ये होता है, कंसल्टेंट ये कराता है, मतलब जिसको कंसल्ट कर रहे हो उसमें ये है, क्या चैलेंजेस आते हैं, ग्रोथ का क्या प्रोस्पेक्ट रहता है. इफ यू कैन कवर ऑल ऑफ इट एंड in how much ever detail you want to cover. That would again half an hour conversation. हाँ, correct. Post अपन छोटा So I would recall and use the same language which our placement team used to do. So IIT में अपना placement team बहुत ही give up type था, we all know. But in IIM, the placement team was like very prepared, very connected to the industry knowledge and very diplomatic communication. They were also very realistic. एक line मुझे CV में add करना, मैं randomly add नहीं कर सकता. I need to give proof about it. So इतना strict है वहाँ पर. I am sure कि अब IIT placement teams might also be bringing such rigor. But I would recall कि placement team का एक talk हुआ था, in which somebody had come who was sharing the different kind of profile. तो पहला clear था कि it depends on the subjects that you are very comfortable in or have deep interest. यदि आप finance में बहुत interest रखते हैं, finance and finance related domains में, तो general आप जो भी financial instruments में deal करती है companies, banks and investment banking और stock broking, इस तरह की जो भी companies आएंगे, या startups. Now startups are also rated equally in some of these roles. तो fintech for that matter. So जीरोधा वगैरह का एग्जांपल आप ले सकते हो. तो जो भी financial instruments में deal करती है, they are the preferred rules for finance for people who are interested in finance. Second comes the marketing. Marketing में जो interested है वो FMCG domains या sales based domains across industry, MSMEs और multinationals और startups equally, जो भी sales में deal करते हैं वो sales based front end roles में इन लोगों को recruit करते हैं. I would not get more into this क्योंकि अभी ये landscape का broad view दे रहा हूँ. In operation, people who are into operations, they would go into the logistics based company. Amazon being one of the biggest logistics companies. People know कि ये e-commerce है, but it's a logistics company. Flipkart, Delivery, these are big logistics companies. And that also includes the big companies across board, Tatas and Adanis and Ambanis. They have a very lot of work in operations domain, in plant operations, in customer service operations, call center operations. So all this will become part of the domain that the person interested in operations would apply for. So I would delve more into that domain. Then people who would be, what comes next? HR. Yeah, so people who are into HR and people services would be keen in all kind of roles which are across companies in the HR based function. And
HR is pretty much in every company. Depends on the level of payment that different campuses accept. So that is the level of duration that companies will accept to pick up on your campus. So I think that pretty much covers a lot of it. There is a growing space of analytics, which data and analytics is coming up uh, from the time that I was in campus. तब शुरू हुआ था ये. Now it has like become a uh, proper domain. इसके लिए day 2 में companies भी आती हैं हमारे campus data and analytics के. So lot of people who are into these, who carry these interests, are also coming there. And हमारे time से product management was also increasing. So PM roles. So now it has become one of the most abused word. PM Bangalore में कहीं भी पत्थर मारो एक PM टकराएगा. So that has very much abused. So वो भी एक domain है where people with and PM people are very much like a operations or project management kind of person who will traverse across different functions and deliver a product or a category. They lead such function. So different e-commerce or companies like Amazon, Flipkart, e-commerce companies primarily look for PM roles. So ये पूरा landscape view है. अब इसमें थोड़े बहुत और भी होंगे, but I would not go into that. Consulting में छोड़ दिया, which is the last that I picked. So consulting is like now consulting can be defined in two ways. One is the strategy consulting, जो कि big, which are like premium, super premium job, which is Bain, BCG, McKinsey, and Booz. Booz has now AT Kearney has become part of that. So Bain, BCG, McKinsey, and AT Kearney, ये चार हो गए आपके premium strategy company. That is like वहाँ you have the view of the world. You are talking to CXOs, you are advising them, you are giving a lot of very focused work over short time, delivering the strategy and coming out. You are not part of the implementation project. Implementation takes time. So those companies charge very premium on a strategy roles. They put very smart brains into a problem and deliver it to the CXO, who can then, depending on their capability in the team, they will give it to someone from different from outside the organization to monitor the execution, but they will execute themselves. The strategy advice will be given by people from these 4-5 organizations. What is the work life in that? Because I was not part of that, I cannot comment very correctly. But as far as I know, it's very hectic. Work-life balance is absent. वो पैसा दे रहे हैं तो अच्छे से निचोड़ते भी हैं. So you cannot even say no to late night hurdles in such organization, because their deadlines are very close, very twisted, and people get billed by hours, sometimes even minutes. आधे घंटे के लिए आपसे टाइम दे रहा हो तो उसका भी बिल करूंगा मैं, and those billings would be in lakhs. So imagine the pressure on the person who has to justify that billing. So उसके लिए बहुत preparation चाहिए. You have to be super smart, and career growth is if I would say that if you are someone who can take care of your health and your mind while you are juggling, you can make a career in there. But most of the people, within the 2-3 years, they get burnt out and they fizzle out. So it's a very squeezed out pyramid. नीचे में बहुत सारे लोग हैं जो पेडल वर्क कर रहे हैं, but very few people could make sense of this world
move at one level, then one level. Ultimately, partner बनते हैं who hold the equity in the partnership firm and can bring more clients, interesting projects, and manage a team of their own. तो ये वर्ल्ड है पूरा प्रीमियम कंसल्टिंग जो स्ट्रेटजी कंसल्टिंग वर्ल्ड बोलते हैं. हाँ. Next is the big four. Big four is like PwC, KPMG, EY and Deloitte. ये चार हो गए आपके बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन. बिग फोर में मतलब थोड़ा सा मिक्स है. PwC के पास स्ट्रेटजी एंड भी आ गया आफ्टर द मर्जर, तो थोड़ा स्ट्रेटजी पीस भी है उनके पास. डिलॉयट भी स्ट्रेटजी रोल्स करता है, स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट करता है. बट these four organizations are predominantly making their money through operations related work. तो आपको ज्ञान भी देंगे, ज्ञान के साथ इम्प्लीमेंट कराने में भी हेल्प करेंगे. सो पीपल द ऑर्गेनाइजेशन सी these four consulting company as implementation. तो इनका जो चार्ज रेट है वो मैकेंजी BCG जैसा नहीं होगा, थोड़ा कम होगा. And that is why the work life would be thoda sa more chilled out. It would also depend on the manager that you get in your life. If the manager is like ऐसे ही screw करने वाला है तब तो कुछ नहीं कर पाओगे, because he would be ambitious, he would want the team to be ambitious and he would pull you along. Those who can cope up with that ambition and carry the similar value systems, they will grow. Those who could not, they will either get transferred across teams or leave the organization. So ये वहाँ पे generally work life है. But the career graph is good for those who stay. If you see, the retention levels in these big four organizations are very good. So those who stick for long. जल्दी लोग नहीं छोड़ते. जो छोड़ते वही लोग हैं जो रियलाइज कर जाते हैं कि यार ये वर्ड अपने लिए नहीं. So they do not like jump from KPMG to EY to फिर ऐसे. जो लोग स्टिक करते हैं, they stick and they just revolve around these four organizations. और वहाँ पे सिमिलर नेटवर्क्स होते हैं, सिमिलर प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो दे आर वेरी कंफर्टेबल. यदि PwC में बैठे हैं 2 साल तक बैठे रहे, इंक्रीमेंट नहीं मिला, जंप कर गए KPMG में नहीं मिला, so they keep jumping and if they are of good talent and good network, they have a reputation, so they will get due increments and promotions in time. और फिर वापस भी आ जाएंगे 5 साल के बाद, वापस भी आ जाएंगे. एसोसिएट डायरेक्टर के लेवल पे गए थे कंसल्टेंट के रूप में, आ गए एसोसिएट डायरेक्टर. सो दैट हैपेंड. दैट्स अ वेरी यूनिक मैच these big four have created. But what I have realized is you rightly said, what is the value that gets added? So value is in the eyes of the beholder. है ना? Very ambitiously summed. क्लाइंट को यदि समझ में आया, उसको यदि एक लाइन भी स्ट्राइक किया कि मेरे काम का है, तो बस उसी का वैल्यू 25 लाख हो गया. बट यदि 25 लाख दे दिया, उसको कोई इतना सारा रिपोर्ट दे दिया उसने, बट उसको कोई काम का नहीं मिला, तो फॉर हिम दिस वाज अ वेस्ट. सो a lot of it also depends on the readiness of the client. क्लाइंट कितना रेडी है. तो बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है to justify the value that we have, but to look at it from my own perspective, because that is what I could justify why I did not stick with consulting for long, because I see that in a consulting world you tend to advise clients on problems which they are facing over decades. And it is true that having a third party view of a problem which I am seeing on a daily basis can be if I am seeing a problem which I am seeing on a daily basis, somebody else could see a different side of it which I might not be seeing, and that could be of value to me. That is true. But what is the probability of that person seeing something is actually of
actually a different side of the view. In consulting, primarily, it has become, as much I could see, most of the content that we were getting, we were taking it from the middle managers of the same organization or lower management from the same organization, because they were not able to talk to the senior management. There was a lot of gap in communication between them. And they were aware कि ये problem है, इसका ये solution हो सकता है, क्योंकि अब आप आ गए हो, आप ही हमारे सर को बता दे. So many times it becomes like here, it is the dishing out of the cake, which they already know the recipe of it, but they could have baked themselves that they knew they knew कि oven कहाँ रखा हुआ है. Simply, oven भी उनके पास है, but रखा कहाँ हुआ ये नहीं पता है. So simple. So many times it does feel that the level of value that we are adding is not worth it. So मेरे लिए वो था एक, and दूसरा ये था कि the, because I see myself as someone who loves taking charge of the problem myself. मतलब खुद solve करना है, खुद लोगों को motivate करना है, खुद being in the middle of the problem excites me. But as consultants, you are asked not to be in the problem. You have to be staying away from the problem. Let the client be in the problem. Let them get stuck, and then we will advise कि वैसे फंसे हो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे निकल जाओगे. At times it feels very demeaning. मतलब so for that pure reason I moved out of consulting, because I could not relate to that kind of seeing from the ring view. मैं ring के बाहर और वहां से view दे रहा हूँ. I wanted to be in the ring myself, and so I chose the path of getting into a startup world, because that was a very obvious route. Consulting के strategy team से I could be a part of a strategy team in a growing startup. I could choose to be in the big organization, but फिर वो big organization के पास वो फिर system, फिर processes, आपकी responsibility वैसे एक BI dashboard बनाने की हो जाती. यहाँ पे because this was a growing organization and they were looking for smart people to actually take charge of the problem. I could relate more to what I needed at that time. So that is why I joined. That's Right. So Ravish, thank you for sharing that about consulting. Consulting के बाद, so you realized, you said कि नहीं, this is not your cup of tea, because बहुत सारी चीजें value add में लग रहा था कि probably you're not adding as much value as जितना कर सकते हो या फिर जितनी करनी चाहिए and all of that. ठीक है, फिर right. क्या decide किया कि अब क्या करना है? No, so I had told you ना कि I wanted to be in the problem rather than from outside the problem, as consulting usually happens to that. So there were different options to go into a proper operations-based work in big teams, or at that time when I was contemplating the switch, startups were a very buzzword. And in startups, वो growing startups में एक अच्छा opportunity बन रहा था. They were also willing to pay equal and better than the consulting pay. So that is something that was worth considering. ऊपर से I was also looking at applying and learning something on the job for a eventual entrepreneurship opportunity of my own. मतलब थोड़े सपने उसी समय देखने शुरू कर दिए थे कि अपना करेंगे. तो अपना करने के लिए कंसल्टिंग वाज नॉट हेल्पिंग. सो आई वांटेड कि मतलब कोई खुद का बिजनेस खड़ा कर रहा है या किया है तो उसके जो चैलेंजेस होंगे उसको एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आप फील करके देखो, सो दैट देन यू कैन टेक अप more responsibilities as an entrepreneur. So this is out there for all budding entrepreneurs. यदि आप अपना कुछ करना चाहते हो तो my best advice is to join someone who is also enterprising, be part of that team, be part of the hustle,
if you enjoy that hustle, you will also enjoy the hustle that you will finally take up for your own. Otherwise, you will just realize कि boss इतना hustle मैं नहीं कर सकता, and you will be saved a lot of money, risk, reputation हाँ quite early uh, in your own lifetime. तो वो to add, हाँ yeah, प्लीज। नहीं, you can intervene here. राइट, सो मतलब मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ऐसा ही लगता है कि ये बहुत बज़वर्ड है और सबको लगता है कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप परसू करनी है, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ किशोर बियानी। एंड आई रिमेम्बर किसी पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि यार मतलब आपने क्यों लिया, एंड ही वाज लाइक कि यार मैं ना समझ था इसलिए मैंने एंटरप्रेन्योरशिप कर ली। राइट, अगर मुझे पता होता कि इसमें क्या क्या होने वाला है और क्या क्या चैलेंजेस हैं तो मैं कभी करता ही नहीं। तो कितनी बार ऐसा रहता है कि लोगों को लगता है यार एंटरप्रेन्योरशिप ये है वो है, ये करने को मिलेगा वो करने को मिलेगा। सी आई हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर, ट्रुथ बी टोल्ड एंटरप्रेन्योरशिप से बेटर लर्निंग कहीं नहीं। लेकिन वो जो रोलर कोस्टर है ऑफ सक्सेस एंड डिफीट, ऑफ फीलिंग हाईज एंड लोज, इट्स लाइक कि रोज आप इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो और जीत रहे हो हार रहे हो, जीत रहे हो हार रहे हो। जीतोगे तो प्रोबेबली 1% ऑफ द टाइम, बट हारोगे 99% ऑफ द टाइम। इट्स कि रोज आपका ना बहुत बहुत, जिसको आप शिद्दत से प्यार करते हो, रोज आपका ब्रेकअप हो रहा है ना। 100 में से एक दिन ही आपको मिल रहा है, 99 नहीं। तो मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ जो किशोर बियानी ने बोला। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज कि मतलब जितना, मतलब व्हाट ही मेंट वाज कि यार अगेन मैं ना समझ था इसलिए मैंने कर लिया, अगर मेरे को पता होता कि ये है तो मैं करता ही नहीं शायद कभी। सो मतलब आई फाइंड इट ट्रूली इंसाइटफुल। सो अगर एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो व्हाट रवीश वाज सेइंग इज कि किसी ऐसे जने को ज्वाइन करो जो एंटरप्राइजिंग है। कितनी बार उसके स्ट्रगल देख के आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार मेरे को नहीं करनी है। मेरे को रियलाइज हो गया कि मेरे को नहीं करनी है। सो डू दैट बिफोर यू टेक दैट प्लंज फॉर योरसेल्फ। yeah, and in fact, because I did that with Kardeko, I could see that the decisions on day-to-day basis that CEO was making and the founders were taking decisions on left, right and center. पूरा का पूरा डिपार्टमेंट वाइप आउट हो रहा है, एक नया डिपार्टमेंट खड़ा हो रहा है, कोई आज हायर्ड हुआ कल ही चला गया. Things were so shaking for me because the cultural context that we come from कि यार मतलब जॉब मिल गया, तेरे घर में लड्डू बटेंगे और तेरी जॉब मतलब सेट है, और यहाँ पे लोग की एडिंग फैडिंग सब चल रही है ऑन द गो. तो इट्स अ वेरी बिग कल्चरल शिफ्ट फॉर लॉट ऑफ. तो ये सब रियलाइज हुआ, एंड इन द प्रोसेस आई ऑल्सो फाउंड दैट उस समय आई हैड इट इन मी कि मैं हसल कर सकता हूँ कुछ समय के लिए. तो मैं यही एक रियलाइजेशन मेरे लिए काफी था टू टेक ए रिस्क आफ्टर कार. देखो, दूसरा ये भी था कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1 year, even though I worked literally as of for setting up the operations street, call center को पूरा ठीक करना, उनके जो इंटरफेस थे उसको क्लीन अप करना. There were a lot of interesting work that I did across departments, working with product managers, working with call center executives, everything, bringing the product together in line with the customer expectation. So बहुत interesting work था, but at the end the whole strategy team was asked to go, the ping slip, and we feel that साला इसके लिए मरा रहे थे हम. Uh, so uh, so so that also sometimes can allow you to either plunge yourself fully into your own entrepreneurship. साला जब मरा ही रहे थे तो अपने लिए मराते. So और you will feel that यार साला ठीक है, यहाँ मरा के नहीं समझ में आया, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे सिस्टम्स रहेंगे, प्रोसेस रहेगा. कम से कम मुझे लॉजिकल ग्राउंड्स पे जाने बोला जाएगा, या तो साला पैसा नहीं है स्कूल करके जाने बोल दिया, साला काम किया तो कुछ तो वैल्यू होना चाहिए ना. So that is very much the question that anyone could have. I also had those justified questions. तो मतलब मैं थोड़ा सरफिरा था उस समय, and also I had the energy and realization to hustle. So I decided कि मतलब करना है, जो मन में सोचा है एक बार ट्राई करते हैं, वर्क करेगा नहीं करेगा
अपने पेरेंट्स को देखेंगे। कैसे कन्विंस किया, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं। तो मैंने कहा कि यार मतलब मैंने सिंपली बोला कि देखिए, थैंकफुली तब तक शादी भी हो गई थी, तो शादी हो गई थी तो तो 2 नहीं 3 लोगों को कन्विंस करना। हाँ, बट इंटरेस्टिंगली शादी हो जाती है ना, आप एक प्रॉपर जॉब में रहते हो तो शादी हो जाती है उस समय में, तो आपको बहुत सारे लोग कन्विंस नहीं करना होता है। बट व्हेन यू आर इन ए स्टार्टअप या अपना स्टार्टअप कर रहे हो, तब कन्विंस करना कि यू आर वर्दी ऑफ ए मैरिज बहुत ज्यादा फाइटर हो जाता है। तो माय एडवाइस इज कि यार शादी करना ही है, और यदि जिससे करना है वो सेट है, तो एक जॉब या एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में करते करते काम करते करते ही वो क्लोज कर लो, ताकि वो हेडेक तुमको अनड्यू स्ट्रेस नहीं दे पर्सनल लाइफ में। सो मेरा पर्सनल लाइफ में वो मोस्टली सॉर्टेड था, एंड टू आई कुड टेल टू माय पेरेंट्स कि मेरे तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन है कि मैं एजुकेशन लोन का बर्डन आपके ऊपर नहीं आने दूं। तो एजुकेशन लोन जो मेरा आईएम का था वो मोस्टली taken care of that, and I have made sure कि even though I would be starting up, I would be part of some fellowships which will take care of the basic expenses in on the go. तो ये सब आप यदि secure कर पाते हैं तो parents are willing to let you try. तो और ultimately घर में किसी ने try नहीं किया है तो सब सोचते हैं कि कुछ सोच के ही कर रहा होगा। हाँ, चले ये तो ये समझदार तो है, ये तो ये तो समझता एमएससी कॉलेज में पढ़ा है, ये तो समझदार है, तो कुछ सोच के ही कर रहा होगा। तो मतलब आप थोड़ा लीप ऑफ फेथ लेते हो, इट आल्सो कम्स विद लॉट ऑफ कैलकुलेशंस दैट यू मेक फॉर योरसेल्फ, कि मतलब लाइफ में जो करना है उसके लिए क्या क्या क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं। इफ यू रिकॉल देयर इज ए क्रिटिकल पाथ थ्योरी जो हम लोगों ने आई थिंक एस के काकोटी ने सिखाया था हम लोग को, क्रिटिकल पाथ थ्योरी इन गियर्स, कि गियर से मुझे यहाँ तक पहुंचाना है पावर को, तो क्रिटिकल पाथ क्या होगा। तो बड़ा एक गियर लाओ, एक छोटा गियर लाओ, एक क्रिटिकल पाथ इतना लंबा, बट पावर का ट्रांसफर बहुत अलग हो जाता है। एंड वन स्मॉलर गियर वुड हैव वेरी लिमिटेड पावर, द लार्जर गियर विल शिफ्ट द होल मोमेंटम। तो मतलब खैर इट्स अ वेरी टेक्निकल सब टेक्निकल कॉन्सेप्ट, बट व्हाट आई वांट टू टेल इज कि you would decide your critical path for transfer or transition depending on the risk that you can take. Correct. So if you can take a risk like no relevant field, no relevant experience, no relevant domain, with unrelated people, कोई trust नाम का चीज नहीं, and you just jumped it. This is like an extreme of it. Versus you go with someone who you already know, there is a certain degree of trust, you build contracts in position जहाँ पे you safeguard your interest and you secure your finances in a bit. You go into geographies and domains where you can actually add value, and you are also learning in the process. So, and finally, you are also not very much compromising on the value that you bring on the table to adjacent to the finances that company can give to you. So it is like a very low risk versus very high risk. अब ये एक स्पेक्ट्रम है जिस पे खेलना है अपने को. So I would rate that I took a lot of risk because I realized that यदि मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डिग्रीज हैं तो आई कैन कम बैक. यदि मैं अभी लो रिस्क लूंगा तो बाद में हाई रिस्क कभी ले ही नहीं पाऊंगा. So I had made a conscious decision to make a high risk with some degree of protection of myself, to finances and knowing people whom I can trust. Beyond that, agriculture was not a known field to me. I had no degrees in agriculture. Bihar, I have never worked in Bihar. If people could say that Bihar was my native state. So state was native, but I was born and brought up in north of Bihar. But my work, which I picked, was in South Bihar. So North Bihar and South Bihar completely different geography, different mindset, different culture. So वो भी एक कॉन्शियस डिसीजन था.
But ultimately, between all of that was, I wanted to feel the thrill of leading teams and building teams, building solutions on a problem which I felt nobody is solving. Farmer problem कोई नहीं क्यों नहीं pick कर रहा है? And there was a lot of anger in that when I was pursuing it. The food that we eat is coming from the fields that are tilled by farmers. And if farmers are not getting sustained through the markets and the solution, our food will stop. So that was connected with obviously some amount of fear also, but a great deal by the anger at the situation which was around us. And I knew that someone was passionate and whom I can trust, and he was trying to build a team in Bihar. So I thought कि यदि बिहार में हम ये करके दिखा पाए, so Bihar happens to be one of the most toughest geography जहाँ पे फंडिंग नहीं आती है, लोग भरोसा नहीं करते हैं, मॉडल्स नहीं चलते हैं. बट इंटरेस्टिंगली देहात करके एक एग्रीटेक कंपनी है, DHAAT, जो यूनिकॉर्न बनने जा रही है. आई थिंक अब तक से शायद यूनिकॉर्न बन भी चुकी है. तो एग्री में यूनिकॉर्न है. सो बिहार से वो ओरिजिनेटेड, वो नॉर्थ बिहार में कर रहे थे उस समय का. तो व्हेन वी स्टार्टेड वी इन्विजन कि हम लोग साउथ बिहार में सिमिलर टाइप पे काम करें. Although the path that we took was very contextual to the problems on the ground, which was very different to what they had actively worked on. वो एक different story है, but that gave lot of inspiration कि यार वो कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं. और हम यदि करेंगे, बिहार में काम कर लेंगे, तो बिहार से तो बेटर इकोसिस्टम है रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया. So it was like fighting the odds to come out. यदि सक्सेस कर गए तो अच्छी बात है, नहीं सक्सेस किए तो उतना लर्निंग तो रहेगा ही अपने. एंड वी विल लर्न इन द प्रोसेस दैट व्हाट वी रियली वांट. तो मैंने 6 महीने से 1 साल का ब्रेक लिया था अपने लिए. बट वंस आई गॉट इनटू इट, आई रियलाइज मैं जो मॉडल्स एंड सिस्टम मैंने अपने लिए सोच रखे थे कि ऐसे ऐसे करेंगे तो फार्मर्स को कन्विंस कर पाएंगे, उनसे हम एडॉप्शन बेटर कर पाएंगे, और अल्टीमेटली 6 महीने में उनके फर्स्ट क्रॉप से अच्छा रिटर्न मिलेगा, दे विल बी हैप्पी. एंड इफ दिस मॉडल गेट्स एक्सेप्टेड, then I could think of building up the model. But I realized everything, once it hits the reality, it fails. तो मेरा पूरा जो जेट था वो क्रैश होके, बर्न होके, ऐश में कन्वर्ट हो गया. एंड आई हैड टू लर्न फ्रॉम द फार्मर्स कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है. जो मेरा वर्ल्ड व्यू था और जो उनका वर्ल्ड व्यू था बहुत डिफरेंट था. तो आई हैड टू लर्न फ्रॉम द कम्युनिटीज. मुझे वहाँ पे इमर्शन करना पड़ा to see the actual problems that they are facing, their families are facing, what kind of ingenious solutions they are applying, and why markets are taking them for granted. So we feel that the markets are taking them for granted, but at times farmers are also taking markets for granted. फार्मर्स भी वैसे ही हैं, फार्मर्स भी बहुत स्मार्ट हैं. आपसे बात करेंगे कि हाँ हाँ रोपनी के समय में आपसे सारी बात हो जाएगी, क्रेडिट्स के सारे मॉडल्स आपसे डिस्कस हो जाएंगे. बट इफ दे सी कि अभी मार्केट में भाव बढ़ा हुआ है और आपसे बात हो रखी है इस भाव की, तो चुपचाप से प्रोडक्ट वहाँ सेल हो जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा. और आप जब पूछने जाओगे तो कहेंगे सारा साहब पूरा तो फसल खराब हो गया, चिड़िया चुग गई या बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, all of that. So you have to be very careful. Ultimately there are humans involved in all of this. However technology you apply in this, humans are smarter than machines and technology. So there were huge realizations in this, and what we realize is the value in the aggregation. When people come together, the volumes grow. So when volumes are big, people come on the table to negotiate. Individual customers से कोई negotiate नहीं करता है. But when there is a group of association, that is why FICCI or CII
or these unions have power because they are aggregation of people. So same for farmers. So we realized that farmer producer organization, which was getting pitched by government of India across boards, farmers can also own companies. So it's an interesting model. Farmers can own companies. It is itself a view unheard of. And only example we could think of is Amul. Amul के अलावा और कोई example ही नहीं. So first time this was being brought forward that farmers can purchase inputs at a very high discounted price. They can own, they can purchase seeds and other pesticides for their crop. Because they would have volume, they could also get extended loan opportunities from banks. ट्रैक्टर खरीद सकते हैं. एक किसान को ट्रैक्टर बैंक नहीं देगी, बट ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स को बिल्कुल देगी, क्योंकि there is a huge land bank available for each of them. So we saw value in this and we pushed very aggressively. तो कैसे वो 6 महीने 1 साल 3 साल हुए पता भी नहीं चला. And by the end of the 3 years I realized that even though it was a very interesting and very transformational experience for me, I was finding more joy in working with young people, young लोगों को interesting technology, interesting model सिखाने में, and to get them more inspired. But I also realized that in the farmland, most of the farming is being done by the middle-aged farmers, जो 30, 35, 40, 50 में है. यंग लोग नहीं करना चाहते खेती. They feel demeaned, all because मोबाइल का बहुत ही penetration हो गया, इंटरनेट है. Lot of young people have been able to migrate to cities, so they become sort of role model for people sitting back in गांव, in village area. गांव के लोग को लगता है कि वो फंस गए, and यदि Do वो you think खेती that का is right? Do you think that is changing? मतलब अभी नहीं, it नहीं. will take some more time. अच्छा, अभी भी मतलब लोगों का फैसिनेशन है शहर जाने को लेके, शहर में काम करने को लेके. And I would not say that people who move out are happier, because वो भी एक illusion में जी रहे हैं, because now they have moved out, they have taken selfies with Taj in background. People think यार ताज के पास इसका घर है, and they could not say वो मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, वाला स्टोरी पूरा फ्लैशबैक में चलेगा आपके. And those people are also stuck. So that is true. right, right. ठीक है. मतलब मैं what I was coming at was कि मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था, I'm not sure Reddit या कहीं पर, but what they were saying is कि गुजरात में कुछ there are these tomato growers who probably earn 5% yield on their on their farm. What that means is कि अगर उनका 1 करोड़ रुपए का फार्म है तो उस पे वो आलू उगाकर 5 लाख रुपए करते हैं, विच इज कम्प्लीटली टैक्स फ्री. एंड अभी बहुत सारा ये क्या बोलूं मैं, अवेयरनेस भी आ रहा है कि यार जो खाना आ रहा है उसमें देयर आर लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड बहुत इस तरीके से आ रहा है. तो देयर इज दिस कल्चर कि यार कैन यू ग्रो योर ओन फूड, या फिर खुद उगाओ और फिर उसको खाओ, दैट्स दी हेल्दीएस्ट फॉर्म. तो इसलिए मैंने पूछा कि मतलब 5% रेंटल, मतलब 5% तो रेंटल यील्ड भी इट्स नॉट वेरी कॉमन, राइट? मतलब आपने कहीं हाई राइस अपार्टमेंट में बिल्डिंग ली है तो आपको ठीक है मिल जाएगा 5%, लेकिन कहीं पर आपने बंगलो लिया है तो आपको 5% नहीं मिलेगा उसका. तो अगर खेती करके मिल रहा है और उसमें तो टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है तो मतलब मैंने कहीं मतलब पढ़ा था. तो व्हाट डू यू थिंक? मतलब सी आई मैं तो बस पढ़ के मैंने जाना है, बट यू वुड नो दिस बेटर. सो तो एक चैलेंज तो बहुत क्लियर है कि द इकोनॉमी ऑफ गेम इज इन एग्रीगेशन. सो लैंड मास का भी एग्रीगेशन जिसके पास है, जिसके पास 8-10 एकड़ एक जगह पे है, he can do an economical farming, he can manage the farm better. बिहार जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे वहाँ पे बहुत फ्रैगमेंटेड लैंड बैंक्स है.
एक ही परिवार में इतने फ्रैगमेंट्स हुए हैं, मतलब भले वो 100 एकड़ का जमीन होगा, बट वो इतना टुकड़ों में बट गया है that nobody would have more than 5. यदि आपके पास 5 एकड़ एक जगह है, you are one of the richest farmers in Bihar. So that there are challenges on that. But I do believe that even if you have a huge land bank, the amount of effort that goes in growing food, from labor, from input, from machinery, and ensuring that product gets sold in market, it's not an easy work. बैठ के नहीं Not होगा ये as सब. easy as it sounds. Yes. तो बहुत सारी चीजें सही होनी चाहिए इसके, एंड ऑल ऑफ दैट इज कमिंग विद द बिगेस्ट रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज. मतलब एक बारिश आ गई, आपका पूरा बर्बाद. एक कीड़ा आ गया, the whole productivity goes down, and you cannot protect against this. Nobody gives insurance. Crop insurance is there, but then it has its own mage. uh, it is very difficult to bypass those models. So मतलब Right. farming is not easy as it sounds. But as you said that some of the youngsters are thinking that in farming, organic farming करते हैं, sustainable farming करते हैं. So uh, so I would not deny that people are You getting can be the attracted. Kishore Biyani, है ना? Hmm? You can be the Kishore Biyani here कि नहीं तुम नासमझ हो इसलिए करना चाह रहे नहीं. हो. Yeah, and people realize lately the value that is in organic is in selling it, not in growing it. If you have a set of customers who appreciate and acknowledge the value that is being put and are willing to pay premium for it, then you can pursue that path. यदि वो नहीं है ना, तो you will be squeezed left, right and center, क्योंकि आपका प्रोडक्शन वैसे गिरेगा. Other people around your farm would be applying pesticides in their farm that will have runoff water that will come in your own farm. You will not be able to pass on certification because पानी आप कहाँ से बचाओगे? पानी तो आप इधर उधर से ही लोगे ना. And if you create channels around your farm, that will cost you lot. वो सब cost को आप justify कैसे करोगे? So it's not easy as it sounds. And in organic farming, in south, particularly around metros, it is picking up. मुंबई के अराउंड, बैंगलोर के अराउंड फार्म हाउसेस लोग जहाँ ले रहे हैं वहाँ पे. तो ये सब रिच लोगों के हैं. रिच लोग करने की हिम्मत दिखा सकते हैं. दे कैन हायर सम फार्म हेल्प. they can make sure that their food is grown in a way that they want. But ultimately, people like you and me have to eat food which is grown like just like anywhere else. तो वहाँ ज्यादा ऑप्शन बचते नहीं अपने लोग के पास. तो द कॉन्शियसनेस इज ग्रोइंग, बट एज फार्मर्स आर आल्सो ह्यूमन. वो अपने लिए जो उगाते हैं उसमें खाद और दवा नहीं डालते, बट जो बाजार के लिए उगाते हैं उसमें सब कुछ डालते हैं. So you have to understand where that is coming from. They are conscious, but they are also driven by money. So until Correct. you take care of that, they will Nothing not take wrong. care of. Yeah. Right. मतलब everybody has to optimize for themselves. Also, Ravish, going back to when you shared कि यार हमने साउथ बिहार में सोचा था कि हम कंसल्टिंग करेंगे. सो टेल अस मोर अबाउट इट कि क्या जो एग्जिस्टिंग फार्मर्स थे उनकी प्रॉब्लम समझते थे एंड देन योर रोल वाज टू सजेस्ट यू नो कि ये नहीं ये उगाओ इस तरीके से उगाओ नहीं वैसा उनका नहीं था. प्रोडक्ट मार्केट. सो व्हाट टेल अस तो मोर हमारा अबाउट इट. हमारा सिंपल मॉडल था. हम लोग पहले स्टडी कर चुके थे साउथ बिहार में सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स में फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं. सो इन मानसून सीजन जैसे खरीफ वाला टाइम जो है उसमें पैडी छोड़ के और कुछ नहीं ग्रो करते, बिकॉज देयर लॉट ऑफ वाटर इन. एंड because it's a community based farming, so if everyone is growing paddy, it makes no sense to grow anything else. सब पे पैडी करते हैं.
so we cannot intervene in that stage. But we could intervene in the Rabi season. So post winter, when the paddy is harvested, farmers in South Bihar tend to grow onion, and we could see that there is a huge fluctuation in onion prices over years. जैसे अभी टमाटो में हुआ है, तो अनियन में हर 3 साल पे आता है, and there are huge fluctuations. So we wanted to tap on that geography, and we also saw that within onion prices there is a fluctuation over seasons. Like जब हार्वेस्ट होता है उस वक्त सारे प्राइसेस क्रैश होते हैं, बट धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ते हैं, एंड टुवर्ड्स मानसून स्टार्ट बिहार में दूसरे जगह से प्याज आ नहीं पाता है. उस वक्त यदि किसी के पास प्याज होगा, that person will be able to sell at premium. So the value is in two things: one, growing variety which can be stored for longer duration, and two, building capacity so that any farmer could store such produce for longer duration without getting spoiled. So हमारा फोकस यही दो पे था. अनियन से शुरू कर रहे थे, और अनियन में ही ये दोनों पे हम लोगों ने काम किया. जो भी हमारे साथ जुड़ रहे थे उनके साथ यही वैल्यू प्रपोजिशन थी कि आपको हम एक इम्प्रूव्ड सीड वैरायटी देंगे along with फार्म बेस्ड नॉलेज, कि कितना कब कब क्या डालना है, कितना करना है, all that which is required for a better produce. And two, जब भी आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, we can give you the market knowledge. आपको डेली APMC के प्राइसेस आपको मिल जाएंगे, ताकि आप एक एस्टिमेशन कर सके कि यदि लसलगांव जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से सारे मंडियों के प्राइसेस स्टार्ट होते हैं. एवरीवन लुक्स अप टू लसलगांव कि आज वहाँ का क्या भाव है, इससे मैं आज यहाँ गया में या पटना में भाव सेट कर पाऊँ. So if we get the भाव of that mandi in a certain linear tangential pattern, farmers could make a judgment कि उसको कब फसल निकालना है. It's like an ATM for it. So market knowledge coupled with interesting with an insightful input and farming advisory, यही हमारा वैल्यू था प्रपोजिशन जो फार्मर्स के लिए. वी ऑल्सो एडेड ऑन टू दैट सेइंग कि आप यदि एग्रीगेटेड वे में करोगे काम, यानी एक गांव केवल प्याज करता है, तो उस गांव का हम लोग एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे, जिसमें करीब 50-60 फार्मर्स एक साथ होंगे विथ सर्टेन वॉल्यूम एस्टिमेशन, और उस वॉल्यूम एस्टिमेशन का एक वैल्यू निकलेगा जो कि 50 लाख 1 करोड़ जो भी वैल्यू होगा, या वो वैल्यू के बेसिस पे योर कंपनी कैन डिमांड नेगोशिएशन विथ इनपुट प्रोवाइडर. आपको बीज जो कि 1500 रुपये किलो मिलता है, आपको 1200 या 1000 रुपये किलो मिलेगा. आप जो खाद DAP 800 रुपये बुरा लेते हो, आप एक कंपनी के द्वारा बन जाओगे तो वो आपको 550 रुपये में गवर्नमेंट डायरेक्ट आपके यहाँ एक ट्रक भिजवाएगी. सो ऑल ऑफ दीज आर द वैल्यू दैट वी प्रपोज टू द ऑर्गेनाइजेशन इफ दे वांटेड टू एग्रीगेट. एंड उसके अपने चैलेंजेस भी है. पॉलिटिक्स वहाँ भी थी और हुई भी, बट effectively this was a gamut of solution that initially got proposed. And हम लोग ये सवाल होता है कि ये सब तो रबी में करते थे नवंबर से लेके अप्रैल तक, तो मई से अक्टूबर हम क्या करते थे. तो मई से अक्टूबर हम लोग जो पैडी कर रहे हैं उस पैडी पे आप फोकस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं. बट व्हाट एल्स इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज यू कुड वर्क ऑन. किसान तो वो बंदा है, वो खेती कर रहा है, बट उसके परिवार में और भी तो लोग हैं. इफ यू कुड जनरेट मोर ऑफ फार्म इनकम्स, दी मंथली सैलरी वाला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है, हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स का, वो फार्मर्स के लिए अभी बहुत एब्सेंट है. इज डिपेंडेंट ऑन कि 6 महीने बाद मेरा फसल कटेगा, फिर बिकेगा, उससे जो पैसा आएगा तो फिर मैं अपने फार्म लेबर को पे करूंगा, अपने ट्रैक्टर वाले को पे करूंगा, अपने इनपुट वाले, और थोड़ा पैसा जो बचेगा मैं अगले फसल पे लगाऊंगा.
तो मैं क्या खाऊंगा अभी? सो इट्स अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। सो वी थॉट कि क्या क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो विंटर्स में गया के समय गया जैसे क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती, तो हमने फिगर आउट किया कि यार मशरूम यहाँ पे तो लोग ग्रो कर ही लेंगे। तो छोटे छोटे हट्स हैं, तो उसी हट में एक पोर्शन में आप यदि मशरूम के छोटे छोटे बास्केट बना के डाल लोगे तो मशरूम हम एग्रीगेट कर लेंगे। आप ये आपकी पूरी एफपीओ है, आप सब एक दूसरे पे भरोसा करते हो, एक साथ मशरूम एग्रीगेट कर देना, गया में सेल कर देंगे, गया के अराउंड जो मार्केट्स हैं जहाँ पे कंज्यूमर्स लेते हैं वो एग्रीगेट कर देंगे, सेल हो जाएगा, आपको कुछ पैसा भी मिल जाएगा और इसमें कुछ लगने वाला ज्यादा है नहीं। तो इसी तरह से मशरूम आ गया, हनी आ गया, वहाँ पे मोरिंगा होता है, वहाँ पे सहजन जो बोलते हैं, तो सहजन भी एक बहुत ही हाई प्रोटीन कंपोनेंट है जो हम लोग इंट्रोड्यूस किए, जो ऑलरेडी वहाँ कम्युनिटी का पार्ट था, बट पीपल वर नॉट एबल टू सेल इट। पीपल वर जस्ट सेइंग कि इसको कौन खरीदेगा, इसको क्या बेचेंगे। So we were able to think through it and apply minds on branding and selling. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। एंड हमने रियलाइज किया कि यदि फार्मर्स को ये रियलाइज आप करवा दें कि केवल खेती पे डिपेंडेंट ना रहे, खेती के अलावा भी कुछ ना कुछ करते रहे, वो करते रहता है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करता है, बट वो दिहाड़ी के काम में इतना ज्यादा फंस जाता है कि खेती भी ठीक से नहीं कर पाता है और दिहाड़ी में भी अपने शरीर का बैंड बजा लेता है। So instead of dihari, if you could think of more ways in which farmers can apply minds of farm opportunities around them. किचन गार्डन आप में हम लोगों ने बोला, तो किचन गार्डनिंग आप करो अपने ही आसपास, तो कम से कम न्यूट्रिशियस खाना तो जाएगा। आप तो सब्जी कुछ नहीं खाते हो, तो अपने अराउंड ही साग पात सब कर लोगे, तो खेत भी नहीं लगा आपका, आपके झोपड़ी के सामने वाली जमीन में ही अच्छा खासा मूली साग ये वो हो गया, खाते रहो आप। So we were able to bring some insightful changes in the lives of farmers whom we work with. वो बहुत fulfilling experience रहा मेरे लिए personally, and I could see that people are still continuing with that. Even though I have left, I know that the work is still continuing and people are benefiting from it. So yeah, that has been the work that we do. Thank you, Ravish, for sharing that. Last a couple of questions. I know we have overshot time, बहुत ज़्यादा, but I'll stick to it. ठीक है. So, we'll finish it quickly. You've also worked in a not-for-profit, and I think not-for-profit के around भी एक stigma है अभी. मतलब when you look at developed economies like US, वहाँ पे बहुत professionally run होता है. A lot of quality checks are there. However, it's not the same with India, right? मतलब a Right. lot of times it is seen as an avenue कि आप आपकी ब्लैक मनी को वाइट कर सकते हो, या फिर फंड्स Vice आर्बिट्रा, versa. जो भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ एनजीओ एज अ सेक्टर इन इंडिया? क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर करियर, या फिर इज इट टू अर्ली टू स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स इन अ नॉट फॉर प्रॉफिट? Okay. So like any other सेक्टर, मतलब एमएसएमई को भी एक सेक्टर ही मैं मानता हूँ, वो भी एक बहुत बड़ा यदि कैटेगरीज में बांटो तो वो भी एक बहुत बड़ा डोमेन हो जाता है। सो एनजीओ एज ए सेक्टर has been very has not been very regulated by government in India. बहुत ही खुला छोड़ के रखा था एनजीओ वर्ल्ड को कि non-governmental, there is no government intervention in, and they are purely that humanitarian organization or organizations who are focused on solving real social problem. तो इस तरह के प्रॉब्लम पे जो काम करने वाले लोग थे, थोड़ा लेफ्टिस्ट माइंडसेट वाले लोग आए या मिशनरीज थॉट्स वाले आए. आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम्स. थिंग्स हैव how things in NGO world have evolved. And during that time also, as there are a lot of people who were doing real impactful work, some people also took advantage of the lack of regulation in it.
तो आप जो बोलते हो कि साइफनिंग ऑफ फंड्स हुए या ब्लैक वाइट हुए, these were very shrewd people who took advantage of the uh, the intentions that government did not have in intervening. So ultimately, now what we are seeing is increasing regulation in the ecosystem. FCRA laws बहुत tight हो गए हैं. Governments are taking note of the foreign funds that are coming to the non-profit organization. India-based जो donation capacities है CSR, that has become more dominant in the funding ecosystem. CSR अपने आप में एक बहुत ही वेल रेगुलेटेड मैकेनिज्म है. 2% ऑफ प्रॉफिट हैज टू गो, तो प्रॉफिट आपको एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करना ही है. इफ यू आर मेकिंग सर्टेन 5 CR से ज्यादा प्रॉफिट, तो उसका 2% आपको डोनेट करना ही है. एंड जो डोनेट आप कर रहे हो उसको उसी साल में खत्म करना ही है. So there are very watertight mechanisms through which government evaluates the work done by non-profits through these ecosystems. So CSR laws, FCRA, ये दो बहुत ही tight law. And as governments are realizing that regulations are low, they are prioritizing some professional ecosystem building activities. Like Section 8 को वो promote कर रहे हैं. Section 8 companies are being promoted, even though they have they are non-profit structure, but the objective could be non-profit, but the structures are very like company. So, so Section 8 companies are getting promoted. Trust and society आप बनाना बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है. इट्स नॉट एन इजी. ROC में आप जाओगे, बहुत अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पे. So we would be seeing lesser and lesser instances of non-regulated organizations getting promoted in funding environment across non-profits. So I see that a growing opportunity for professionals in the non-profit to build their career. One, because professional experiences are encouraged. क्योंकि आप Section 8 कंपनी बना रहे हो, CSR में आप CSR के साथ आप डील कर रहे हो, FCRA फॉरेन फंड्स आप ऐसे किसी के एहसान को उठा नहीं सकते हो, तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा. You have whatever you are saying, you have to deliver. And activism and professional delivery में एक बहुत ही वो है, बहुत ही गैप है. So activism will not take you far. अभी non-profit world वैसे ही थोड़ा सा evolve हो रहा है. So the activists are finding it difficult to just remain activist at the mercy of कि मुझे कुछ donors मिल गए, individual donors, and I can go with it. Governments are also tightening H&I funding. हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स वो कहाँ फंड कर रहे हैं, उनको डिटेल्स देने होते हैं अपने इनकम टैक्स फाइलिंग्स में कि वो कहाँ डोनेशन दे रहा है, क्या पर्पस है, उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स क्या है उनके पास. सो आई सी दैट with increasing regulation, the opportunity of cleanup in the environment is high. Young लोग और जो talented professionals हैं, they have an opportunity to be part of this cleanup. जो निकल के आएगा उसमें अच्छी organizations होंगे, genuine work होगा, transparency होगी उनके कामों में. And I know that a lot of people might not be able to see this from far, but because I am in the middle of all of this, I am seeing that with increasing professionalism, the pay parity is also improving. The clarity of rules is also improving. Work-life balance is also something which organizations are now talking about. Field roles and office roles are getting very clearly demarcated. And although it is moving towards a certain bit of corporatization,
but the value around passion is not undermined. If you are not passionate about the solving a actual problem, you will not find joy in the work that non-profit does. So non-profit world is for someone uh, who likes to be in the middle of a human problem, uh, poverty or different distribution of wealth or climate change or uh, energy for that matter. Mm, I think anything and everything which makes our world unfair is a problem to solve. If the world is fair and equitable, then NGOs have no role now. So we all know that we are far from that space ki world fair or equitable ho jaye. So till that happens, non-profits and governments also have a lot of work to do. So I'm not taking government separate from NGO because uh, NGOs are solving problems which governments are not able to solve. And if governments are taking a problem which NGOs were solving before, it's a validation of the work that NGOs are doing. Okay, Right, now, so ultimate win for an NGO is the government picking up the mantle and taking up their model and building it on their own, or they become part of the execution at a scale through government, which we are doing in PAN IIT. We are solving this problem at a scale. We have been able to solve this problem at a scale because government came forward and offered us, you take it, you scale the model, we provide the capital and necessary support. So that is where the beauty of the NGO world is. It is not going to remain like totally removed from the government. It is going to get mixed up a lot with the government as more and more NGOs would work closely with government, because interest of both is the benefit of the communities. More and more poverty has to be reduced. Both of them want this. Both of them want the fair and equitable. My meaning of government is not just politics. It's the overall ecosystem, including bureaucracy, uh, executives, and legislatives. So all three of them together. Why we elect government? So that they take care of the challenges that happen around us: roads, uh, electricity, the poverty, income levels, consumer ecosystems, all of that. So the governments also want that more, and whatever they are not able to do, they are looking for partners or collaborators from non-profit world. In fact, some of the corporates are also coming forward. But corporates have their own ulterior motive of their profit maximization, which doesn't go in line with the government motive. So that is why governments find it really difficult to partner with corporates. But for non-profits, it's it works very beautifully if their values are aligned with the partners in the government ecosystem. The values match, they the work that they do just scales up. And if that doesn't match, so there will be friction, and you cannot beat government if they come in your turf. So NGOs have to either leave the turf, they have to move to other geographies or move to another problem that they will solve. So that is going to happen. There is evolving landscape, and the roles are also changing. M&A has become M&A is a monitoring and evaluation. So uh, uh, आज से 10 साल 15 साल पहले एनजीओ को इवेल्युएट ही नहीं किया जाता था. मैंने आज आपको दान दे दिया, मैं पूछना क्यों जाऊंगा कि आपने कैसे खर्च किया. मेरे काम और एनजीओ भी ऐसे फील करते थे कि मुझे बस दान मिल गया, अब मैं कैसे खर्च कर रहा हूँ, व्हाई वुड आई बॉदर. मैं बस आपको एक एनुअल रिपोर्ट और आपको एक यूसी बना के दे दिया, आपने दान दिया है, ATG सर्टिफिकेट, बस जाइए. Now people are asking intelligent questions. They are becoming involved in the how the funds are getting utilized, who is it benefiting. Are same people getting benefited through different projects, or actually different people are getting impacted through different funds? So both transparency are in, and
lot of this is evolving. It's not a nascent stage. It is at a pretty evolved stage. Lot of big organizations and non-profits are hiring professional. नज का नाम आप LinkedIn पे बहुत देखते होंगे. नज marketing इतने बड़े लेवल पे करता है. प्रथम is there, कैवल्या is there, गांधी फेलोज आपके अराउंड भी है बहुत सारे. उदयपुर में तो उदयपुर जोधपुर राजस्थान में तो पूरा भरा हुआ Gandhi Fellowship का network. So education based non-profits are like maximized and they will grow. They will go further grow because education is a space that still needs a lot of intervention. But other domains are still underserved. Energy में बहुत कम लोग हैं, waste management में बहुत कम लोग हैं, climate change के ऊपर बहुत काम करना बाकी है. वोकेशनल स्किलिंग हम लोग जो काम कर रहे हैं डू नॉट हैव मैनी मोर एग्जांपल. इतने लोगों को रोजगार देना है. इंडिया इज लाइक बिलियन साइज पॉपुलेशन बट एंड लेस देन 30 में ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन है. 300 मिलियन जॉब्स आप कहाँ से लेके आओगे? सो गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो वेरी परप्लेक्स्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व इट. So they need a lot of smart brains and people with right intentions to come together to solve it. So yeah, I would say that there is this is a great time to be part of non-profit world. Again, but you have to be very clear why you are coming in for. If you think कि आप वो black white वाला system में आ रहे हो, then this is not. They're going to change. Yes, then you have to change. But if you are coming with a passion to solve a problem in in whatever ways you have expertise, यदि आप finance expertise है तो आप finance में आओगे, आप operation पे operation. I think the roles can be discussed and they are open, but you have to be passionate about solving a problem. So if that underlying criteria is there, non-profit is a space that you can consider. Right. Thank you for sharing that, Ravish. Not just this, but your whole experience through IIT, IIM, consulting, corporate job, entrepreneurship, not for profit. Now we see you as Coach Ravish. Who is Coach Ravish? Like, ये क्यों किया? What is it that you see? कहाँ gap है? And what is it that you're trying to do with Coach Ravish? I think it started with the informal mentoring that I used to do. So बिहार से हैं तो बिहार में बहुत कम एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो IIT IIM किया हुआ है. और मेरे फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के फ्रेंड, whoever knows me try to reach out and ask कि वो कहाँ फंस रहे हैं करियर के अलग एस्पेक्ट में. बहुत सारे लोग, almost 90% of people are stuck in other engineering or medical domain. कुछ कर नहीं पा रहे हैं. They are feeling where to go next. And informally they used to ask, and I used to just give my world view to them. Some could find it useful. They could take decisions for themselves in a more informed way, not in ignorant way. Generally ignorant way में हम लोग करते हैं. किशोर बियानी example you said कि मुझे पता नहीं था कि now people know कि यार मुझे पता है कि किधर जा रहे हैं और ये रास्ता किधर जाता है, so they can make more informed decisions. So I was doing this informally with a lot of people who reached out through अलग-अलग network. In November, December, somebody said to me that थोड़ा फॉर्मल ही ट्रैक करके देखो, because what you can add value to people, why restrict it to them? मतलब why not open it to see and see what others can take out from your experiences. And before that I had been sharing some stuff on LinkedIn, and people were engaging with it in a pretty decent way, which I found here. It must be adding some value to their life, especially the parts about inflection points through my life had gone through. If people could find that of value, so they can make their own lives enriching. November, December के around, I finally launched myself saying I am open for mentoring opportunity, but career mentor ऐसा कोई word होता नहीं है.
तो I could figure out कि career coach ही लिखते हैं सब लोग, so I have used career coach, and it has been 6 to 7 months, I think 9 months now. Yeah, it has been 9 months since I have formally started, and I had very interesting conversations with a lot of people. I've also learned in the process, because now I know कि आप formally कर दिया तो मुझे भी updated रहना पड़ेगा different domains में, different skill sets में, and I keep interacting with young people and people who are in early stages of career, पहले 3 4 5 साल में है, because that is where people have the most confusion and most unaware state of world view for them. So मैं वहाँ पे helpful आया हूँ अभी तक. I have offered whatever I have offered has been found of use to people who are in those stages, or people who are looking to switch careers, switch domains, switch roles. तो जब वो switch कर रहे हैं, so how they could make themselves open for that kind of opportunity, how people could see the value कि मतलब कोई operations का बंदा strategy में क्या कर रहा है, and why he is presenting themselves. So it has to be a mix of 3 things. You have to have very goal clarity कि आपको जाना किधर है. That is the foundation. If you are not clear, everything you build over it will get demolished. तो पहले तो एक परफेक्ट गोल क्लैरिटी हो, एटलीस्ट सेंस ऑफ डायरेक्शन हो कि मुझे जाना किधर है. इफ नॉट द एंड गोल, वो यदि आप विजुलाइज नहीं भी कर रहे हो तो दैट इज फाइन. तो गोल क्लैरिटी के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये पाथ पे मुझे चलने के लिए मुझे क्या क्या स्किल सेट्स चाहिए, और वो स्किल सेट्स मेरे पास अभी कितने हैं, और मुझे कितने गेन करने होंगे टू बिकम एलिजिबल फॉर दैट पाथ और दैट काइंड ऑफ रोल वेयर आई वांट टू गो. और फिर उसके बाद एक एस्टिमेशन ऑफ एफर्ट होना चाहिए, और वो एफर्ट का एस्टिमेशन जहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं. मुझे लगता है एआई में हमको अप्लाई करना है, मतलब रातों रात एक हफ्ता रगड़ देंगे, 4 5 यूडेमी के कोर्सेज कर लेंगे और जाके इंटरव्यू में पकड़ देंगे एंड मुझे जॉब मिल जाएगा. लाइफ डजंट हेल्प. पीपल कुड आल्सो सी कि वेयर योर आंसर्स आर कमिंग फ्रॉम. So estimation of effort and the relevant experience that you gain to make yourself fit for those kind of role, that also has to be very clear. तो ये 3 चीज जब आप करते हो ना, तो ये 3 चीज के फाउंडेशन पे आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करते हो. यानी अपना रेज्यूमे आप उसी हिसाब से सेट करते हो, अपने नेटवर्किंग आप ऐसे लोगों के साथ करते हो जो इस तरह के रोल में वर्क कर रहे हैं या उनके लिए डिसीजंस लेते हैं, तो वैसे लोगों के साथ नेटवर्किंग करते हो. फिर नेटवर्किंग करते करते यू मार्केट योरसेल्फ, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हो. लिंक्डइन पे आप रिलेवेंट स्टफ लिखते हो so that people could recognize you for the value that you can bring to their organization or the work that they do. And that's how finally you get those interview calls and those opportunities to work. So ये एक path है which I have seen work for me when I was making those switches, and I see that young people could greatly benefit from this kind of perspective. क्योंकि ये बहुत सारा स्ट्रेस जो होता है ना, वो नॉन क्लैरिटी की वजह से आता है. एंड यदि ये सब क्लियर होगा, तो ये भी क्लियर मैं करता हूँ कि आपको अपने जॉब के लिए भी एक फनल बनाना पड़ेगा. सेल्स में फनल होता है ना, वैभव तुम तो अपना बनाते ही होगे कस्टमर्स को फनल, तो अपना जॉब अप्रोच करने के लिए भी मुझे फनल बनाना पड़ेगा. एंड दैट इज अ व्यू मेनी पीपल कुड नॉट रिलेट टू. मैं जॉब अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं क्यों फनल बनाऊंगा? मगर कंपनी अपने लिए फनल बनाएगी, तुम नहीं बनाओगे. मतलब तुमको एक इंटरव्यू निकालना है, मतलब तुमको एक जॉब निकालना है, उस जॉब से पहले फाइनल राउंड होगा. एक जॉब के लिए कम से कम 3 फाइनल राउंड में घुसोगे तब तो कम से कम एक ऑफर मिलेगा. 3 ऑफर के बाद 3 फाइनल राउंड्स में घुसने के लिए तुमको कितना इंटरव्यू जाना होगा. मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक इंटरव्यू में घुसे और वो सीधा लेकर के तुमको फाइनल राउंड तक ले जाएगा, ऐसा तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं. तो यू हैव टू अप्लाई दोज प्रोबेबिलिस्टिक मेथड.
मैं कितने इंटरव्यूज कम से कम घुसूं ताकि मैं एक या दो जॉब ऑफर्स लेके निकलूं। ये अवेयरनेस और ये प्लानिंग यदि लोगों के माइंड एंड उनके पेपर में रहेगा, सो इट रिमूव्स लॉट ऑफ एंजाइटी। लोग एक दो रिजेक्शन में डर जाते हैं कि यार मेरा कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। मैं कहा तेरे पेपर में लिखा है तेरे को 150 लोगों से बात करना है, 150 में से तेरे को केवल 60 लोग ही रिस्पॉन्ड करेंगे। तो साला तू 90 लोग जो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे उसके लिए क्यों परेशान हो? 60 लोग तो रिस्पॉन्ड करेंगे, और 60 लोग में तेरे को 15 या 20 लोग ही इंटरव्यू का मौका देंगे। तो 15-20 लोग इंटरव्यू का मौका देंगे तो 30 लोग तो तुम्हें रिजेक्ट ही करेंगे ना भाई। तो so yeah, you have to become okay with rejections. Correct. And so ये मुझे लगता है कि ये मैं यदि अपने ही 5-10 साल पहले अपने सेल्फ को देखता, तो उस समय मेरे लिए भी ये फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी का कारण बनता था। तो नाउ आई फील कि यार वो अननेसेसरी एंजाइटी थी। तो यदि थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहता, थोड़ा ज़्यादा पता रहता, मुझे कोई अच्छा मेंटर रहता मेरे अराउंड जो इन स्पेसेस को जान, तो बहुत सारा जो मीएंडरिंग किया शायद वो भी मैं अवॉइड कर सकता था। आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग व्हेन आई से सो, क्योंकि वो मीएंडरिंग के भी अपने मुझे फायदे मिले। बट फॉर समवन हु इज वेरी क्लियर इन द अर्ली स्टेज कि मुझे लाइफ में इस तरह का काम करना है, और कोई उसको बता दे कि यार इस तरह का काम करने के लिए ये स्किल सेट चाहिए और ये तुम अपने प्रोफाइल में ऐड करोगे तो जल्दी पहुंचोगे, तो वो 5-7 साल जो वो लर्निंग में गुजारेगा वो रिलेवेंट लर्निंग करेगा, और वो रिलेवेंट लर्निंग करेगा तो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। So I feel that as someone who has walked that path with mistakes, there is responsibility, and there is a great deal of responsibility I feel कि मुझे guide करना चाहिए. I don't know, many people would not take it because it's ultimately their own path. They have to walk that path. I can only show the path. Walk तो उनको ही करना है. So as long as they walk and they feel that by seeing the path, they could walk more efficiently, more in a more informed way, my purpose is solved. And that is where I find joy in. When I say this, I'm not saying that this is something that I'm doing this for full-time basis. No, I am doing this because I am very happy in the work that I already do with the non-profit. And I am very happy and very proud for the work that we do in Jharkhand. And because I am happy and I am proud, and finally I am arrived here, I see that why not everyone could find joy and happiness in the work that they could do. When work feels like it's not a work anymore, I think that's the best feeling that you would have. So यही कोशिश है, and when I try to guide people and find their interest, ultimately घूम फिर के यही आता है कि जहाँ आपका इंटरेस्ट है और जहाँ आप कुछ नया करना चाहते हो, वहाँ आप यदि सही स्किल्स पकड़ोगे तो आप टाइम का फ्रीडम भी गेन करोगे, एक रेस्पेक्ट भी गेन करोगे, एंड यू विल नॉट बी वन अमॉन्ग लॉट ऑफ पीपल, यू विल बी यूनिक अमॉन्ग अ लॉट। तो वहाँ से आपको मनी का भी एडवांटेज मिलेगा बिकॉज यू विल बी यूनिक। तो आप लोग नेगोशिएट करेंगे भी आपसे, आप 5 बोलोगे, लोग 6 देने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। तो that negotiation only comes when you are offering something different and with great deal of value. तो ये जितना जल्दी क्लियर हो जाए ना लाइफ में, आई थिंक उतना अननेसेसरी का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। करेक्ट। यही कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच रवीश पूरा शेयर करने के लिए योर जर्नी एंड all of it. I'm sure it would be useful to a lot of people thinking of a career in बहुत सारे different fields, because we talked about a lot of fields. So thank you so much for taking out the time. वेलकम एंड थैंक यू अबा, 2 घंटा आई थिंक मुझे सुनने के लिए। इतना हम लोग बात कैंपस में भी नहीं किए जितना
And it's great to reconnect back in a very different way. I think we should just schedule calls with all our batchmates All like of our this. batchmates. Thank But you. all the best to your initiative also, Vaibhav. I have been watching your work, and you have been sticking to it for quite a good deal of time. And I'm sure a lot of young people are benefiting from your contributions in Udaipur and Western Rajasthan area. So I would be happy if I could come of use in any other ways as well. Uh, Looking forward to stay connected. Thank you, Vaibhav. Thank you.